Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are hale and hearty. In previous lesson we had discussed the introduction to biotechnology. Today we will discuss the basis of molecular biotechnology. So let's start our topic with the introduction to the cell. Although biotechnology does not exclusively make use of cells but also of complete organisms or of cell constituents, knowledge of basic cell biology is required to understand biotechnology to its full extent. Cells from all sorts of organisms are used in biotechnology. Not only prokaryotic cells like simple unicellular bacteria are used, but also eukaryotic cells like cells of higher microorganisms, plants, and animals are exploited as well. So let's discuss what is a prokaryotic cell. Here you can see the diagram of a prokaryotic cell. The prokaryotes to which the bacteria belongs represents the simplest cell in nature. Such a cell is in fact no more than cytoplasm, which is surrounded by some surface layers, generally described as the cell envelope. Here you can see a cytoplasm is surrounded by a surface layer which is called as cell envelope. Within a cytoplasm you can find ribosomes, plasmid, and chromosomal DNA. Certain cells do have some flagella in it or fimbriae. It depends upon the nature and type of bacteria. बायोटेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिवली सेल्स को यूज़ नहीं करती, बल्कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को या फिर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या फिर सेल के डिफरेंट पार्ट्स को इस्तेमाल करती है. इसी वजह से बेसिक सेल बायोलॉजी की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बायोटेक्नोलॉजी टू इट्स फुल एक्सटेंट. सेल्स और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके तमाम सेल्स बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो सकते हैं. लाइक प्लांट सेल्स इस्तेमाल हो सकते हैं, एनिमल सेल्स इस्तेमाल हो सकते हैं, बैक्टीरियल सेल इस्तेमाल हो सकते हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से टीन होते हैं. ये सिंपल यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल की. मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स बायोटेक्नोलॉजी की बेसिस के तौर पे यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स कैन आल्सो बी यूज्ड लाइक सेल्स ऑफ हायर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या फिर एनिमल्स. प्रोकैरियोटिक सेल सिंपलेस्ट सेल है इन नेचर. सेल बेसिकली एक साइटोप्लाज्मिक मटेरियल या कंटेंट है जिसको सेल एनवेलप में सराउंड किया होता है, और इसके अंदर दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर ज़रूरी प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड. इसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. फ्लैजेलास का होना या ना होना डिपेंड करता है सेल की टाइप के ऊपर और किस टाइप का सेल बैक्टीरियल सेल यूज़ किया जा रहा है फॉर biotechnological development. There are two types of bacteria that are present, gram positive and gram negative bacteria. In the bacterial world, one distinguishes two main types of organisms. They are called as gram positive or gram negative based on different behavior in a classical cell staining technique. The fundamental difference between these two prokaryotic types are mainly apparent in the structure of the cell envelope. The bacterial cell envelope consists of a cytoplasmic membrane and of a very characteristic wall structure called a peptidoglycan layer.
The cells of gram-positive organisms are multi-layered and with the peptidoglycan, while only one or two such layers are found in the cells of gram-negative organisms. However, the clearest distinction between the two types of bacterial cells is that in the gram-negative organisms, the cell is surrounded by a very specific extracellular membrane called outer membrane. Here you can see this is the gram-negative bacterial cell and this is the gram-positive bacterial cell. This OM is representing a specific extramembrane layer which is called as outer membrane. Next to the cytoplasmic membrane, also called the inner membrane, is present. The outer membrane is the permeation barrier for substances that are transported into or out of the cell. Prominent and very particular chemical constituent of the outer membrane is the compound named lipopolysaccharides or lipopolysaccharides. Biopharmaceutical products gained from these type of cells or gram-negative organisms must be extensively purified, especially when they are used as pharmaceutical for man or animal, since this lipopolysaccharides or LPS set free during the isolation of the product and has even in a very low concentration severe toxic effects to man and animals. दो तरह के बैक्टीरियल सेल वर्ल्ड में डिस्टिंग्विश किए जाते हैं एंड द मेन टाइप ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स. फंडामेंटल डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ये है कि इनका जो सेल एनवेलप है वो डिफ़र करता है ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम नेगेटिव का, जब इन्हें एक स्पेसिफिक सेल स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है. ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं मल्टी लेयर्ड होते हैं. इनके पास सेल एनवेलप में पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर होती है और इसके बाद ऐसी पेप्टिडोग्लाइकैन 2 या 3 लेयर्स होती हैं और उसके बाद इंटरनल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन और वो स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के तौर पे एग्जिस्ट करती है. इस आउटर मेम्ब्रेन की ख़ास बात यह है कि इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिन्हें लिपोपॉलीसेक्राइड कहा जाता है. और ये आउटर मेम्ब्रेन एक परमिएशन बैरियर का काम करती है उन सब्सटेंसेस के लिए जो इन या आउट ट्रैवल कर रहे होते हैं सेल से. सेकेंड टाइप की मेम्ब्रेन जो एक पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर के बाद एग्जिस्ट करती है उस इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है. बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स से अटेन की जाती हैं या फॉर्म की जाती हैं उन्हें एक्सटेंसिवली प्योरीफाई करना ज़रूरी होता है, स्पेशली जब ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ह्यूमंस में या एनिमल्स में इस्तेमाल की जा रही हैं, क्योंकि लिपोपॉलीसेक्राइड्स आइसोलेशन के दौरान फ्री हो जाते हैं और फ्री प्रोडक्ट के तौर पे ये लो कंसंट्रेशन में भी सिवियर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स रखते हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में. In the bacterial cell, DNA is generally organized in one large circular molecule. Here you can see the chromosome. The bacterial DNA is not surrounded by a nuclear membrane and is not as complex in organization as DNA in eukaryotic cells. One generally refers to bacterial DNA as chromosomal DNA, analogous to the nomenclature in eukaryotic cells. Bacteria may, apart from the chromosomal DNA, harbor autonomously replicating small DNA molecules, which are called as plasmids.
Functions that are essential for a bacterial cell are usually encoded by the chromosome, whereas functions encoded by plasmids are generally in no way essential. Nevertheless, plasmids endow the bacterial cell with properties that may be very important for the survival of the bacteria. Antibiotic resistance and production of toxic proteins, for example, are well-known plasmid encoded traits. Plasmids are used in biotechnology as important and basic tools for the recombinant DNA technology. When we refer to plasmids as a small DNA molecules, this is of course in comparison to the size of the chromosomal DNA. Here you can see that chromosomal DNA is larger in size and plasmids are very smaller units. Besides, one has to realize that plasmids can vary in size. Small plasmids, generally the relevant ones for biotechnology, harbor about 6,000 DNA building units called nucleotides. Chromosomal DNA of a bacterium contains at least 1,000 times more nucleotides. The DNA content of an animal or plant cell, on the other hand, exceeds several hundred times that of the bacterial cell. Moreover, the DNA of the former cells is no longer organized in one molecule but in several linear chromosomes. A popular way to illustrate this fast growing complexity of DNA molecules in nature is based on pages and books. One can easily write on one page the composition of the DNA of a small plasmid, but by its nucleotide composition, using the symbols A, C, G, and T for the various nucleotides in the DNA that we had previously discussed. To do the same for the bacterial chromosome, a book with about 1,000 pages is needed. For an animal cell or a plant cell, it requires a few hundred books, each containing about 1,000 pages to describe the DNA. Bacterial cells, like all cells, harbor in their cytoplasm the ribosomes, as we had seen in the previous diagram, as essential structure for protein synthesis, as well as a great variety of enzymes and other macromolecules required for the proper physiology of the cell. Most important, however, is that apart from chromosome, ribosomes, and sometimes plasmids, generally no other distinct structures are visible in the cytoplasm of the bacterial cell, even when studied in an electron microscope. And there are no compartments present in the cytoplasm of the prokaryotic cell. Bacterial cell DNA जनरली एक लार्ज सर्कुलर मॉलिक्यूल के तौर पे ऑर्गेनाइज होता है. बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में जितना यूकैरियोटिक सेल का डीएनए कॉम्प्लेक्स डीएनए होता है. बैक्टीरियल डीएनए को हम क्रोमोसोमल डीएनए कह सकते हैं, जो कि एक्चुअली एनालॉगस है नॉमेनक्लेचर में यूकैरियोटिक सेल की तरह. बैक्टीरिया में अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए कुछ सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं. ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड्स कहते हैं. बैक्टीरियल सेल में जो इसेंशियल फंक्शंस हैं वो यूजुअली क्रोमोसोमल डीएनए से इनकोड होते हैं, जबकि प्लाज्मिड्स से जो फंक्शंस इनकोड होते हैं वो इसेंशियल नहीं होते, लेकिन जनरली बैक्टीरियल प्रोटेक्शन के लिए, बैक्टीरिया की अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं. प्लाज्मिड मोस्टली बैक्टीरियल सेल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ कोड करता है जो एक्चुअली बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन्स. ये प्लाज्मिड इनकोडेड ट्रेट्स. प्लाज्मिड्स मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट और बेसिक टूल्स. बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल प्लाज्मिड यूज़ होता है.
जब हम प्लाज्मिड को रेफर करते हैं स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स में, तो ये एक्चुअली इन कंपैरिजन रेफर कर रहे होते हैं टू द साइज ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड का साइज़ वेरी कर सकता है, लेकिन स्मॉल प्लाज्मिड जनरली बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, जिनमें मोस्टली 6000 डीएनए बिल्डिंग यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए, किसी भी बैक्टीरियम का क्रोमोसोमल डीएनए एटलीस्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड रखता है, लाइक 6000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 टाइम्स न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर। डीएनए कंटेंट को किसी भी एनिमल या प्लांट सेल के डीएनए कंटेंट को अगर हम लें, तो वो सेवरल 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल डीएनए कंटेंट। डीएनए जो कि बैक्टीरियल डीएनए है, ये ऑर्गेनाइज नहीं होता, एक सिंपल या सेवरल लीनियर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इलस्ट्रेट करने का पॉपुलर वे ये है कि हम इसे जो इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, इनको लिख सकते हैं ऑन वन पेज, और जो कंपोजिशन है डीएनए की स्मॉल प्लाज्मिड की या इसके न्यूक्लियोटाइड्स की, उसे हम जो न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ होते हैं ACGT, इन सिंबल्स को यूटिलाइज करते हुए लिख सकते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के डीएनए को अगर या बैक्टीरियल क्रोमोसोम को लिखना चाहें, तो एक बुक जिसके अंदर 1000 पेजेस हों वो नीडेड होती है इन ऑर्डर टू राइट द होल बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड इट्स डीएनए कॉम्पोजिशन। जबकि एनिमल या फिर प्लांट सेल्स में फ्यू हंड्रेड बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं, ईच कंटेनिंग 1000 पेजेस टू डिस्क्राइब द डीएनए। बैक्टीरियल सेल्स तमाम सेल्स की तरह साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स और एसेंशियल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में वैरायटी ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फिजियोलॉजी ऑफ द सेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बैक्टीरियल सेल का है, अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम, राइबोसोम या प्लाज्मिड से, वो एक्चुअली इसका डिस्टिंक्ट इसके अंदर कोई डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स विजिबल नहीं होते साइटोप्लाज्म में या बैक्टीरियल सेल के अंदर। There are no compartments present in the cytoplasm of the prokaryotic cell, and this is the conclusion of this prokaryotic cell introduction. Let's move further to the eukaryotic cell. Here in this diagram you can see a schematic picture of a plant cell as an example of eukaryotic cell. The eukaryotic cells has a very complex structure, not only by the presence of cell organelles like the nucleus, mitochondria and chloroplast, which is exclusively found in the plant cell, but also by the presence of specific internal membranes and of vacuoles. This complex and compartmentalized structure implies a complicated functional behavior and is one of the reasons that in the initial phase of modern biotechnology, simple bacterial cells are easier to handle and more simple to modify, and they were prominently used. Nowadays, molecular biotechnologists use all sort of eukaryotic cells, exploiting the fast-growing insights in cell biology. अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये एक एक्चुअली स्कीमेटिक पिक्चर है प्लांट सेल की एज एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर सेल ऑर्गेनील्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो कि एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक इंटरनल मेम्ब्रेन्स और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। दिस कॉम्प्लेक्स और कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर एक्चुअली implies a complicated functional behavior, और यही एक रीज़न है कि इनिशियल फेज ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सिंपल बैक्टीरियल सेल्स ज़्यादा प्रेफर किया जाता था बिकॉज इट वाज ईजियर टू हैंडल एंड इट वाज मोर सिंपल टू मॉडिफाई
जबकि मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजिस्ट अब यूकैरियोटिक सेल्स को यूज़ करते हैं फास्ट ग्रोइंग इनसाइट्स जो सेल बायोलॉजी में उसको एक्सप्लॉइट करते हैं एंड दे यूज़ यूकैरियोटिक सेल एज वेल. Let's move further to the next topic, which is a part of the basic molecular biotechnology, that is gene expression. Genetic information chemically determined by the DNA structure is transferred during cell division to daughter cells by the DNA replication and is expressed by transcription, conversion of DNA into RNA, followed by translation, conversion of RNA into proteins. This set of processes is found in all cells and proceeds generally in similar ways. It is one of the main unifying concepts in cell biology. The pioneer of molecular biology called that series of events the central dogma of biology. It was found later that retroviruses, a special class of animal RNA viruses, encode an enzyme that catalyzes the conversion of RNA into complementary DNA. This enzyme, called the reverse transcriptase, since it directs, so to say, the reverse of the transcription, therefore enables an information flow from RNA into DNA. Reverse transcriptase became, as will be shown later, a very important tool for DNA technology. The various DNA linked processes are schematically depicted here. DNA is converted to RNA and these RNA are actually translated into proteins. The central dogma was based on investigations done with the bacteria and viruses. Later it was found that in eukaryotic organisms, many genes are expressed differently from what was predicted by the dogma in the strict sense. In some cases, the RNA derived by transcription of an eukaryotic DNA segment is subject to a process called splicing before it leaves the nucleus. During this process, certain parts, the so-called introns of the nascent RNA molecules are removed, after which the other parts, the exon, are linked together and form the effective RNA for the protein synthesis. Here you can see the gene splicing, where during the process the parts called introns of the nascent RNA are removed, after which the exons are combined together or linked together to form an RNA which is called as messenger RNA, and this whole process is known as gene splicing. Furthermore, it is important to realize that a nascent protein, the direct result of translation, is not necessarily identical to the protein functional in the cell as enzyme or structural protein. Most proteins, as we find them in the cell, are modified by post-translational events. Nascent polypeptides are, for example, trimmed by peptidases. In some cases, lipidic groups are linked to the protein, while in eukaryotic cell, modifications through linkage of sugar groups, glycosylation, is a common event. Such post-translational modifications are important features with regard to the specific function of the protein. Precise knowledge of the information flow in the cell is very important for biotechnology, since it offers possibilities to control cellular processes at the level of gene expression. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन केमिकली डिटरमाइन होती है डीएनए स्ट्रक्चर में, और डीएनए स्ट्रक्चर से वो ट्रांसफ़र होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू डॉटर सेल्स, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब वो डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो रही होती है तो हम उस स्पेसिफिक इवेंट को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. ये डीएनए रेप्लिकेशन के बाद यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है बाय ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए एक्चुअली कन्वर्ट होता है इनटू आरएनए, और उसके बाद आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है.
ये जितने भी सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं जिसमें डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है और आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, ये सेल्स में सिमिलर वेज के अंदर अकर हो रहे होते हैं किसी भी टाइप के सेल्स में, ईदर वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर वो यूकैरियोटिक सेल है। और ये एक मेन यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है सेल बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पायनियर्स इस सीरीज ऑफ इवेंट्स को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं बायोलॉजी का। लेटर जब रिट्रोवायरसेस फाउंड हुए, जो कि एक्चुअली स्पेशल क्लास है एनिमल आरएनए वायरसेस की, जो एक एंजाइम इनकोड करते हैं जो आरएनए की कन्वर्जन डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में करता है, और इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं, जो एक्चुअली रिवर्सल कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली डीएनए is converting into RNA, but due to this enzyme RNA is converting into DNA, जो actually reversal information flow है। reverse transcriptase एक important tool है DNA टेक्नोलॉजी की। various DNA link processes हैं जो schematically depicted है यहाँ पर, यानी first is DNA's conversion into RNA and RNA's conversion into protein. This is the central dogma based on investigations done with bacteria and viruses. Later, it was found that in eukaryotic organisms, बहुत सारी जो genes हैं वो differently expressed होती हैं from what was predicted by the dogma in the strict sense. Certain cases में RNA जो कि transcription से derive होता है eukaryotic DNA segment में, वो एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे स्प्लिसिंग कहते हैं, आरएनए स्प्लिसिंग कहते हैं, जब बिफोर इट लीव्स द न्यूक्लियस। इस प्रोसेस के अंदर सर्टेन पार्ट्स जो आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आएंगे, जिन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं प्री मैसेंजर आरएनए से, और ब्रेक होने के बाद ये प्री मैसेंजर आरएनए सिर्फ एक्सॉन्स को ज्वाइन करता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म करता है, और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स अकर हो रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मैसेंजर आरएनए, जिसमें पहले प्री आरएनए फॉर्म हो रहा है एंड देन कंप्लीट एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, इसमें से इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ एक्सॉन्स हैं जो मैसेंजर आरएनए का पार्ट बनते हैं, जो बाद में जाके ट्रांसलेट होंगे इनटू प्रोटीन्स। ज़्यादातर प्रोटीन्स जो सेल में अटेन होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट्स। नेसेंट पॉलीपेप्टाइड्स को ट्रिम करके पेप्टाइडेजेस से इन सर्टेन केसेस लिपिडिक ग्रुप्स लिंक होते हैं प्रोटीन्स के साथ, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये मॉडिफिकेशन होती है शुगर ग्रुप्स की लिंकिंग के साथ, जिसे हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, जो एक कॉमन इवेंट है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का। और ये सारी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जब हम इन्हें देखते हैं विद रिगार्ड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, प्रोटीन के स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। और इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस की प्रिसाइज नॉलेज होना और इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्लो का जो सेल के अंदर चल रहा है फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन टिल द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ऑफर करता है जो सेलुलर प्रोसेसेस को एट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। So in next class we'll be discussing DNA structure, DNA transcription and DNA translation. That's all from today's lecture. We will continue it in next lesson. Let's call it a day with a quote from Ryan Betancourt, who says that our world is built on biology, and once we begin to understand it, it then becomes a technology. Thank you for patiently listening to this lesson. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.